किसी की अगर गिटहब प्रोफाइल में वो बिल्कुल हरा हरा मुझे दिख रहा है ना झंडा, Correct. तो आई वुड से कि यार है ना, कंटिन्यूसली काम किया है इसने, कंटिन्यूसली कोड किया है, कुछ तो कर लेगा है। 6 महीने का कोर्स करो, जॉब लग जाएगी। और हमारे यहाँ तो 100% प्लेसमेंट गारंटी होता है। इंडस्ट्री को स्किल सेट चाहिए होती है, वो स्किल सेट आपने कॉलेज टाइम में बिल्ड कर लो, बेहतरीन। मैकेनिकल में कर लो, सिविल में कर लो, इलेक्ट्रिकल में कर लो, हर फील्ड में जॉब्स है। इफ यू नो दैट देन इट्स द गेम। Being skilled is the real game. If you are skilled in a particular domain, that increases your surface area of luck to attract more opportunities. We are growing almost 100% year on year in a bootstrap fashion. That's not a fancy number from the funded company's point of view, but fine progress for a bootstrap company. I have been focused on building a company which lasts for generations. I really look up to Tata, Reliance, such types of company more than the startups which get $1 million valuation. टेक एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना है। 6 महीने पहले के स्किल सेट पे अब रिलाई नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली द कर्व इज स्टीपेस्ट इन टेक। Welcome to the channel, Sagar. It is always lovely to have you like together and having to speak to you, right? Having a chance to speak to you. So glad that we are doing it again. Sagar, by the way, has been on this channel as one of the early guests as well. And since then, I've seen a remarkable journey by which he has created his own company, Primathon, and I'll talk about it as we move along in the episode. But I think personally, Sagar has been a mentor, has been a friend, has been a coach, and is someone who I really connect to not only by solving technical problems because we come from the same computer science background, but also we come from similar kind of backgrounds, follow similar kind of mindset and approach in life. So it's always lovely speaking to you. Thank you, Sagar, for doing this, and welcome to the show. Thank you for the kind introduction, Vibhav. It's always pleasure speaking with you, and it's my pleasure be on the show. Awesome. Yeah, I think we know each other for like I think when I more started than 5 years. yeah, same journey. You Yeah. started like I started Primathon, so Uh, great journey. yeah. So Sagar, I think the last time we had you on the podcast, we spoke in length about your journey of building the company and how you were also figuring out, and Primathon was in its very early days. Right. For everyone to know, Primathon is one of the best tech services out there in the country right now, servicing not only Indian, but proudly I can say across Dubai, UAE, across US now, and expanding further and further. It's a completely bootstrapped company, profitable right from day zero, staying true to true to the roots of business and making it sustainable and profitable. So how has the journey really been since the last 4 5 years when you started scaling tech? What's your mission looking like right now, and where are you in it? So it's a great question. So Vaibhav, it's been a 5 years. We are growing almost 100% year on year, in a bootstrap fashion. That's not a fancy number from the funded company's point of view, but fine progress for a bootstrap company. Yeah, so 5 years journey of Primathon has been amazing, especially for me. I grew from an individual contributor, and when I started, I was just managing two people. There was even I could barely manage them and mentor them, but now it's a 100 people company, and we are growing at a very good pace. We have two business verticals now. One is Primathon and another is Primathon Academy. In Yeah. Primathon, we build softwares for customers and startups, enterprise companies. In Academy, we leverage that industry knowledge to train and enable people of the country to build their career in technology. Awesome. And I think what truly is inspiring is that, right from providing services by having a great team of tech folks, you have also shifted or given the skilling space a consideration in your business, right? Which is now the Primathon Academy, where you are also now enabling more folks to join the tech space right now, and by providing them courses in the form of boot camps and enabling them to really get jobs in the tech space. So
how did this originate? Like you were always focused on building a services company, right? How did this scaling thing originate to, kick off within Primathon? Yeah, so more than just building a services company, I think I have been focused on building a company which lasts for generations instead Oh, of very nice. just thinking, a few years and decades and just selling Hmm. out and getting out of the company. But I really look up to Tata, Reliance, Hmm. such types of company more than the startups which get billion-dollar valuations. So, uh, Hmm. idea, of Primathon Academy originated from the fact that, in the Primathon itself, we used to hire, and since being a bootstrap company, we didn't never hired from like very top-notch institutes, etc. We hired from normal regular colleges, and then but we have always focused on keeping our training so good that, whoever comes under Primathon and get trained on things, they become solid engineers. So, Hmm. I started in late 2018, 2019, 2020, 21, 3 years. We built, Primathon, and, build many developers. By then, I think we were 30, 35 people company, but by then we trained many developers, understood, the a life cycle of training a developer. And then we realized, Hmm. why not, build a product out of the training that we are doing in Primathon itself. So and help the masses. Got it. Yeah, so from there we started this course of front-end development. 2022 was more of an experimental year. We were just doing first batch, just designer courses. Me, a few people from the core leadership, tech leadership, we designed the courses, because we understand what a developer needs and what industry needs. So that's where the Hmm. idea originated from, and we thought that, academy can create much bigger impact than what Primathon can. Like of, it's a way of giving back to society also, and, Hmm. truly creating the impact by enabling people with jobs. Correct. No, yeah, that's a very, very wise thing, I would say, because given we have some overlap now being in the skilling space, in the education space. I firmly believe and think of it always that education is just is a crazy enabler, right? मतलब यार लाइफ में आपने कोई और बिजनेस किया या आपने कोई और ट्रांजैक्शन किया, शायद वो एक शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट पीरियड तक के लिए वैलिड रहता है, बट अगर आपके पास फॉर सम रीजन एंड इन सम वे और दी अदर आप अच्छी स्किल सेट आपने डेवलप कर लिए लाइफ में, इट विल नॉट चेंज ओनली योर लाइफ but also change generation of your family, right? I mean, especially in a country like India where there's less employment, there is, less income and so on and so forth, right? For the masses, if you are able to really crack in education, literally your family's generation changes. And this is the reason why top colleges, right, and even all those big names are really, ये क्रैक कर लो लाइफ सेट है, ये क्रैक कर लो लाइफ सेट है. While it's not 100% true, but the data says that if you have like a great background in education, there are high chances that you will end up doing good with your life, right? Of course, things can go haywire, but that's been the general trend. So, Absolutely, I have been a product of Jawahar Navodaya Vidyalaya. It's, it has, it is a central school system which it has branches in every district of the country. uh-huh. And it has very clean people already go through. We at fifth class level, we went through exam where we were filtered at a district level and then got selected in the school. So I Hmm. have seen that I was lucky enough to get in there. I was lucky Correct. to get in the IIT, but these dots have made my journey. And same thing that, since I was lucky enough to get here, and I really feel so, because, I see that many people get such opportunity. I one of the organization that I look up to is Dakshina Foundation. Dakshina Okay. Foundation is a foundation started by Mohnish Pobrai. They, what they do is basically they, select a cream people from Navodaya Vidyalayas, and provide them a free coaching institute for IIT JEE, in Hmm. partnership with a Time and Resonance of the World.
and which has a selection ratio of almost 36 students out of 40 people. And you can imagine, if you can every year, and there are so many branches, there are almost around, I guess more around roughly around 10 plus branches. But let's say if you are giving a selection of 300 to 400 students every year in IITs, and those students are primarily, Jawan Vidyalaya is primarily focused on rural people, rural students. So the Dakshina Foundation is actually empowering those 300, 400 families every year, to become the best and also become the role model for their village. You see how lives they are impacting. Correct. And this is all education. Correct. So, and truly, this is what is needed in the country right now. Right education, right direction. Correct. So yeah, I also believe that education truly, change the fate of the country. Yep. Very true, yaar. And kudos to you to really staying true to your mission of enabling the lives of people right from day zero of building Primathon and now expanding it in a crazy manner. So all the very best to what you do. I'm super, super proud always, and I'm always there to root for you, shouting that okay, Primathon is the best. Same feeling for you. Yeah, so that's a crazy thing. Yeah, I am like now since we talked about the importance of education and how it really changes lives, right? This is a proven fact, and this is the core reason why every parent would want their kids to be really, really educated. While there are numerous opportunities out there right now where you can follow your passion and so on, but and hence the shift towards being skilled, right? I mean, you no longer need to be, let's say, only an IITian to do well in life. Let's keep the context to tech right now while we are in this discussion. Around that, being skilled is the real game, right? That if you are skilled in a particular domain, that increases your surface area of luck to attract more opportunities versus saying that okay, only a particular background in education will help, right? So how do you see this while you are also training people to get into tech? Of course, they have different backgrounds, maybe not from top colleges, even let's say very normal colleges, or even let's say a very separate domain which is far away from tech, but a general aptitude exists. So, what do you think about it? Yeah. So, to that, I would like to share a small story. I come from a small village in Madhya Pradesh, and I have a neighbor friend who had been, an average student throughout his, higher education. He went into a private college based out of Ujjain, and got enrolled in a civil engineering branch. And now civil engineering, getting placement from a civil engineering from IIT, even that is difficult. College of Ujjain, it's way difficult, and the one that you don't know name of, right? What this guy did different was, from the very first year or second year somewhere, he started, he considered someone, and he got in touch with some ठेकेदार who used to do enough enough Local projects. yeah, enough local projects, civil construction projects, government projects also, and number of things. So basically, he had many things, and this friend of mine, who got in touch with him and just started working for him for 3 years of college. He was just working with him as his assistant and was doing every single thing that he could do to free up his boss. In 3 years of journey, he learned everything about the business, about the ठेकेदारी business, as you can say it. And out of which, he understood that okay, the दो तीन मशीनरी होती है, इन मशीनरी की डिमांड होती है, तो मशीनरी अगर खरीद लेते हैं अपन, तो उनको रेंट पे चढ़ा सकते हैं. तो उसने while he was in college, उसने ये सब किया. और ये सब भी जब कॉलेज में कर रहा था, तब वो उसकी स्टाइपेंड कुछ 5,000 10,000 रुपए के राउंड होगी, इससे ज्यादा नहीं थी. It did learnings. So कॉलेज में, खाली कॉलेज में होता है, क्या होता है, एजुकेशन होती है मैक्सिमम. अगर वो भी आप जब जा रहे हो, डेली पढ़ रहे हो फोकस वे में, तो एजुकेशन हो रही है, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा है. इसमें 3 साल इसने काम करके इसने स्किल डेवलपमेंट कर लिया. नाउ गेस द सैलरी ऑफ दिस गाय, मतलब आफ्टर, नॉट द सैलरी बट गेस द हिज मंथली income after he got graduated. 1 lakh. It is roughly around 1 lakh. You know why? Because he could earn a few things, few amount from some amount from his rental machinery income, and then some good placement. He got 60,000 per month job in the civil
space itself. This is what is this? This is basically industry needs skill set. That there are Correct. n functions and number of things which we industry needs you to perform. If you know that, then it's the game, right? So Hmm. we also learn we while at Primathon Academy we also realize this thing that colleges teach you education. Industry needs skill set. Primathon Academy is a gateway between these two to build to convert your education to train you on some skill set and make you industry ready. So I believe that anybody and everybody in the private colleges should start from the very first year about their skill set, working on their skill set. Education, for example, for myself also, what worked actually was I was not very good at DSA because मैंने कभी DSA प्रिपेयर किया ही नहीं. बट फिर भी जॉब लग गई थी बिकॉज आई हैड बीन डूइंग इंटर्नशिप्स इन एवरी विंटर समर ब्रेक एंड देन कंपनी स्टार्ट करी कॉलेज में, तो वहां से जो एक्सपीरियंस गेन किया, दैट द इंटरव्यूअर्स लव्ड दैट कि यार ये बंदा तो वही है जो हमको चाहिए एक तरीके से, राइट? तो Hmm. इंडस्ट्री को स्किल सेट चाहिए होती है, वो स्किल सेट आपने कॉलेज टाइम में बिल्ड कर लो, बेहतरीन है. Got आपकी it. जॉब लगनी ही लगनी है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैकेनिकल में कर लो, सिविल में कर लो, इलेक्ट्रिकल में कर लो, हर फील्ड में जॉब्स है. वॉल्यूम डिफरेंट है हर फील्ड के, लेकिन Correct. यू कैन गेट इट इफ यू हैव द राइट स्किल सेट. करेक्ट. एंड आई थिंक इंडिया में ना मतलब वो ओवरऑल भी थोड़ा परसेप्शन है, एंड दिस इज सैड बट दिस ये नीड्स टू इम्प्रूव, राइट? कि यार अगर मैं एक छोटे कॉलेज से हूँ तो मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज वैसे ही नहीं है, राइट? सो हाँ. उनका वो इंटरेस्ट जनरली ही डाई डाउन हो जाता है वर्सेस सेइंग कि यार अच्छा मैं कुछ स्किल चीजें, मतलब कुछ एरियाज में स्किल्ड हो जाता हूँ, उन्हें फिगर आउट कर लेता हूँ, बिकॉज वो आई थिंक बैक फ्रॉम द टाइम लाइक लेट्स से 20-30 years अगो जब डिग्री पे आपको जॉब्स मिलते हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ स्टिल प्रिवेल्स, एंड स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स वेयर लाइक नॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस हैज बीन सीन डूइंग इंडिपेंडेंट स्टफ. तो यार यही लगता है कि बस गेटवे यही है, कॉलेज की डिग्री आ जाए, ठीक है, एजुकेशन के नाम पे एक डिग्री आ गई, बात की बात है, करेक्ट. right? But I think can specifically vouch, let's say for the tech space. I know a lot of engineers, and I'm sure you also know them more than me because you deal with them at volumes, right? कि जिनका completely different background होता है, but they feel कि नहीं यार ये interesting field है, explore करते हैं, they kind of keep on practicing Many people. and end up being smarter and sharper than, let's say, in few years even comparable or even better to any other coming from a better college or better pedigree or better background, doesn't really matter. Yeah, even better than computer science folks, I would say. Correct. And it's a function of more of not just intellectual intellect, but also your attitude, your hard That work, hunger also, no? and a hunger for getting better, getting better, getting better. Correct. That's the thing which which really makes people. करेक्ट, करेक्ट. एंड मतलब एटीट्यूड के लिए तो यार कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं ना, मतलब आप बोल दोगे कि यार ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम क्लास में आ जाओ, बट एटीट्यूड क्या लेके जा रहे हो तुम उस क्लास में, इन लाइफ में, वो तो कैसे ही सीखोगे, वो तो तुम्हें खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा. तो यार लेट्स टॉक अबाउट प्राइमेथॉन एकेडमी, राइट, वेयर यू डू दीज 6 months boot camps and आप फ्रंट एंड इंजीनियरिंग और फुल स्टैक इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराते हो. बट आपको क्या लगता है, मतलब ये जो 6 महीने में, जनरली दिस इज दिस इंडस्ट्री ट्रेंड ऑल्सो कि 6 महीने में कोर्स करो एंड यू गेट अ जॉब, राइट? हाउ रियल इज दिस? मतलब 6 महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि आप एकदम जॉब रेडी हो जाते हो वर्सेस लेट्स से जो आपने 4 साल या 3 साल पहले कुछ पढ़ाई की थी उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है? बिल्कुल. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आई वुड से. वैभव, आप बताओ, आप कंप्यूटर साइंस से हो, यस. आपके पहले सेमेस्टर में आपको कोडिंग सिखाई गई होगी, है करेक्ट. ना? जावा. क्या आप पहले एक साल में भी कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आपकी जॉब लग जाएगी अगर खाली पहले एक साल का नॉलेज मान ले तो? क्या पहले एक साल की कोडिंग टीचिंग वाज सफिशिएंट फॉर यू टू लर्न कोडिंग रियली? नहीं. नहीं. मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, मैं एक सेमेस्टर तो चलो फिर बोल रहा हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है. यू आर जस्ट हम्म. लर्निंग वेरी फंडामेंटल्स की वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू आर मेकिंग अ माइंड मैप. ऑल्सो रटना तो है नहीं, रटने से तो होगा नहीं, है ना? तो 6 महीने में मैंने भी जब हम लोगों ने कॉलेज में सीखा था, तो हम लोगों को भी एक साल भर लगा था थोड़ा सा एक फेयर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने मतलब में. एक साल में तो थोड़ा बेस ग्राउंड ही सेट होता है कि इस हाँ राउंड से इस होता टाइप की चीजें है. हैं कि हाँ ये सब कर सकते हैं. पूरी इंडस्ट्री 6 महीने में जॉब के नाम पे मतलब कुछ भी बेच रही है कि यार 6 महीने में. हम्म. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहां पे आता है कि यार 6 महीने में आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे. आप मुझे बताओ, हम्म. 6 महीने में बैकएंड भी सीख लोगे, फ्रंट एंड भी सीख हम्म. लोगे, और काम करने के रेडी हो जाओगे, और आपको कुछ नहीं हम्म. आता उससे पहले? यार ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है.
हाँ, एक दो बंदे ऐसे होंगे जो कि 6 महीने में वो भी पुल ऑफ कर ले, आउट ऑफ 1000 पीपल स्टूडेंट्स पूल, ये होंगे। लेकिन इसमें वेरी 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 स्मॉल डेटा सेट, स्मॉल करेक्ट। परसेंटेज। तो हमने इसीलिए हमने देखो, मेरा शुरू से बिलीव था कि यार देखो, फ्रंट एंड इज रिलेटिवली इजी टू एंट्री, बैक एंड हैज अ वेरी डेप्थ एंड many different concepts and थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आल्सो एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड। सो फ्रंट करेक्ट। में हमने स्टार्ट किया कि यार 6 महीने में सिर्फ फ्रंट एंड सिखाएंगे हम आपको, हमने वहां से स्टार्ट किया, सिर्फ फ्रंट एंड ओके। सिखाएंगे। वाई? बिकॉज एक चीज सीखो, ढंग से सीखो, इतना सीखो कि यार आप जॉब में जाके कंट्रीब्यूट कर सको, कि यार आप वैभव ने अगर हायर किया एकेडमी से, तो वैभव, हाँ यार वेब पेजेस बढ़िया बनाता है बंदा, है ना, उतना कर पाओ। उसके आगे तो आपको सीखना ही है, कंटिन्यूसली लर्निंग करनी ही है, बट 6 महीने में फुल स्टैक भी कर लो और सब कुछ हो जाए आइडियल वर्ल्ड में, तो ऐसा रेयरली ही सक्सेस परसेंटेज होता है। इट टेक्स टाइम एंड टू द इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों को भी 6 महीने में फ्रंट एंड सिखाते हैं, कभी कभी 7 महीने में होता है फ्रंट एंड सिखाते सिखाते, कहीं कहीं टाइम लग जाता है, क्योंकि सब हर कोई हर सारे स्टूडेंट फास्ट नहीं होते। वी इंश्योर दैट कि हर एक को साथ में लेके चल रहे हो हम लोग। सो या, आई थिंक इट इज नॉट द राइट इंडस्ट्री में कुछ भी चल रहा है, बट या। नहीं यार, और आई थिंक ये तो फेयर ही बात है। मुझे तो टेक में इतनी डेप्थ लगती है, आप फ्रंट एंड भी 6 महीने में आप सीख जाओगे, शायद सिंटेक्स और सिमेंटिक्स ही सीखोगे लैंग्वेज का, कि ठीक है आप बेसिक चीजें कर सकते हो। बिल्कुल, यू कैन जस्ट इट्स स्टार्ट, लाइक इट्स यू कैन लाइक जस्ट जस्ट स्टार्ट। स्क्रैचिंग द सरफेस, राइट? कि बस सरफेस स्क्रैच हो गया एंड यू नो सम टर्म्स अराउंड इट। Yeah, you can start your as an entry level engineer with that skill set, and that's it. But it's a long way to go. करेक्ट, करेक्ट। तो आई मीन इंटरेस्टिंगली एक्सटेंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, तो आई थिंक जनरली इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमनली सुना जाता है कि यार 6 महीने का कोर्स करो, जॉब लग जाएगी। और हमारे यहाँ तो 100% प्लेसमेंट गारंटी। आई डोंट नो, आई कांट रियली बिलीव कि दिस इज 100% ट्रू, बिकॉज ये तो कॉलेजेस लाइक आईआईटी में ट्रू नहीं होता कि 100% Exactly. प्लेसमेंट You गारंटी। answered it. You answered it already. You don't need to ask me. You answered it already. आईआईटी में करेक्ट। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, कॉलेज की सक्सेस कैसे ड्राइव होती है? कॉलेज की सक्सेस ड्राइव होती है परसेंटेज, प्लेसमेंट परसेंटेज से प्राइमरीली, करेक्ट, ठीक है ना? बाकी सब करेक्ट। प्लेसमेंट अच्छी होगी तो लोग अच्छे निकलेंगे, एल्यूमनाई यहाँ पे हैं, ये कुछ काम बन कर रहे हैं, जाएगा। अच्छा अगर कर। सभी लोग अच्छा अच्छा कुछ कर रहे होंगे तो कुछ कुछ अच्छा बन जाएगा, नेटवर्क और इनमें अच्छे बन करेक्ट। जाएंगे, जैसे दो चार हीरे निकल जाएंगे, है ना, वो ब्रांड बना देंगे। लेकिन 100% प्लेसमेंट आईआईटीज में नहीं होता। अगर 100% प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का है, तो वो बेस्ट कॉलेज होगा जाने के लिए। हम्म। तो अगर कोई भी एक्स कंपनी अगर प्रॉमिस कर दे कि हम 100% जॉब गारंटी देते हैं जी, बाय दैट लॉजिक कोई भी 100% जॉब गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि भाई वो पॉसिबल ही नहीं। अगर कॉलेज नहीं दे सकता तो आप कैसे दे सकते हो कुछ 6 महीने में? करेक्ट, तो ये तो बहुत बड़ा करेक्ट। ऑलरेडी नहीं हो गया। तो अगेन 100% जॉब गारंटी, अगेन थिंक ऑफ इट लाइक ए क्लास। क्लास में 100 बच्चे आए तो 10 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, 20 बच्चे एवरेज कर रहे हैं, 70 वो तो पीपल आर। परसेंटाइल का सीन है ना, कि यार टॉप 10% हर होगा जगह तो कोई सब अच्छा परसेंटाइल का करेगा। एक चीज होता है, परसेंटाइल वाले लोगों की कुछ लोगों की जॉब लगती है, सब लोगों की नहीं लग पाती है effectively। एंड आई थिंक ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन ही है, बिकॉज एंड आई कैन टेल यू दिस बिकॉज आई एम इन दिस नेटवर्क वेयर people are aspiring to be entering into the tech space and they're like कि कहीं ad देख लिया, कहीं वीडियो देख ली कि यार 6 महीने करेंगे फिर जॉब लग जाएगी। हम लाइक ऐसा नहीं होता भाई, मतलब at least don't go with this kind of expectation because you will be heavily disappointed. करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, अब 6 महीना हुआ एंड ओके, स्टार्टिंग में हम लोग भी पिच करते थे, फिर हम लोगों ने अपने आप को किया कि यार झूठ फ्रॉड नहीं बेचना है मार्केट में। हमने भी सोचा कि यार Correct. 2021 में मार्केट इतना अच्छा था कि हर किसी की जॉब लग रही थी, हम भी लगा देंगे, फिर नहीं लगती वो जॉब। I think you also touched a very interesting point, सागर, saying कि यार 2021 में हम भी कर रहे थे बिकॉज मार्केट ही ऐसा था कि पता नहीं, इतना क्रेजी था कि कुछ भी हो रहा था, राइट? कि मतलब एक बंदे को एक्स का ऑफर है, स्पेशली टेक में, वो लेके जाएगा उसको 2x मिल जाएगा, फिर उसको लेके जाएगा तो 3x मिल जाएगा, एंड सडनली he'll be sitting at 3x. Of course, those things and those like some of them also came down crashing heavily now. या बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? अभी अभी कैसा चल रहा है मार्केट, जहाँ पे अगेन हम आए दिन सुनते ही रहते हैं कि यार इस स्टार्टअप ने, इस कंपनी ने इतना फायरिंग कर दी। इवन इन द लास्ट 6-8 months giants like फेसबुक, गूगल एटसेट्रा, एवरीवन फायर्ड, राइट? सो इट्स नॉट लिमिटेड टू कि छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स ने फायर किया, इवन बिग एमएनसीज वर डूइंग दैट, राइट? सो what makes you comfortable to say कि यार, मतलब when you are teaching those let's say 50 students or 100 students in a class, कि यार ये लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ, ये लोग
पहुंच जाएंगे इन दैट स्पेस, बट यू ऑल्सो नो कि जॉब्स तो डिप हो रही हैं, तो हाउ डू यू कीप दैट बैलेंस? तो यार वेरी गुड क्वेश्चन। 2023 टफ रहा है जॉब मार्केट के लिए। इवन कॉलेजेस आर स्ट्रगलिंग। यू वुड हम्म। सी मेनी हाँ, टॉप। इवन आईआईटीज का भी बहुत डिप हो गया ना, प्लेसमेंट परसेंटेज डिप। या इस साल आईटी से भी न्यूज में आया रिसेंटली कि आईआईटीज के प्लेसमेंट में भी दिक्कत आ रही है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में करेक्ट। टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज की बात करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बल्क रिक्रूटर्स है आपके टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर्स, ये लोग ही फ्रेशर्स हायरिंग बहुत लिमिटेड अमाउंट में की है इस बार ना। जनरली हर बार यही ले जाते हैं सर्विसेज कंपनीज ऑफ द कंट्री, यही हम्म। हायरिंग करके ले जाती हैं। तो 2023 टफ रहा है, बट हम लोग एक तो एक्सपेक्टेशन भी रियल सेट करते हैं कि यार देखो यार टाइम लगेगा, है ना। हमारे हम्म। लोग आते हैं 1-2 महीना जॉब के लिए फाइट मारते हैं, बोले कि यार जॉब नहीं लग रही। भाई सीनियर लोग ही नहीं लगती 2 महीने में, तो बात कर रहे हो यार, है ना। तो लेकिन सेटिंग अप रियल एक्सपेक्टेशन, एंड व्हाइल दे आर दे हैव दे लर्न द कोर्स के बाद वी कीप गिविंग देम सर्टेन असाइनमेंट्स, कि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बनाते रहो, सीखते रहो, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर लो। हम्म। जो मार्केट इज गेटिंग रेडी, सो नंबर 1 इज दैट, And नंबर I 2 think I would also like to add here is again on top of what you said कि creating a lot of proof of work, कि यार मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेक्ट। बना के डालते रहो, so there's a lot of prooफ out there कि अच्छा you are capable of doing so many things. किसी की अगर गिटहब प्रोफाइल में वो बिल्कुल हरा हरा मुझे दिख रहा है ना झंडा, Correct. तो आई वुड से कि यार बढ़िया बंदा है ना, हाँ कंटिन्यूअसली काम किया है इसने, कंटिन्यूअसली कोड किया है, कुछ तो कर लेगा ये बंदा, है ना। बहुत बार Correct. Correct. हायरिंग इज नॉट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव कि उसको टेक आता ही आता है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार इमोशनल डिसीजन भी लेते हैं हायरिंग के टाइम पे कि यार ठीक है यार, ठीक लग रहा है, कर लेगा ये बंदा। तो यू एंड ऑल्सो सेकेंडली हम लोग बोलते हैं कि यार आपको नीड नॉट नेसेसरली गो फॉर अ फुल टाइम जॉब ओनली, स्टार्ट विद इंटर्नशिप। आप 10,000 की इंटर्नशिप से स्टार्ट करो ना, 6 महीने काम करो ना, 6 महीने आपका काम रिक्रूट, आपका जो एम्प्लॉयर है वो काम देखेगा आपका, एंड यू 6 महीने में आपको प्रूव करना है, फिर फाइट मार के प्रूव करना है, एंड वंस दैट इज डन आप फुल टाइम वो खुद ही ऑफर कर देंगे आपको। तो यू गेट एन एंट्री सम हाउ एनी हाउ। समटाइम्स वो होता है भाई, कुछ टाइम में अगर वो नहीं भी होता है तो प्राइमेथॉन भी हायर करती है, तो वहां से भी मतलब हम तो हार ही रहे हैं फिर। That's a very subtle way of placing, but good. It's you on the podcast. बढ़िया यार है. या मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो होता है कि बाहरी प्लेसमेंट मतलब, Correct. लेकिन जहाँ पे No, हमको I think पता है, it's a good way, right? कि यार जहाँ हमको पता मतलब है tech hiring is the struggle of the industry. हाँ करेक्ट, जहाँ हमको पता है, लेकिन जहाँ हमको पता है कि देखो यार बंदे में ना इसका, देखो कुछ देर आर अ फ्यू पैरामीटर्स जिन पे मैं बंदों को इवेल्युएट करता हूँ अपार्ट फ्रॉम द स्किल सेट, हम्म. ऑनरशिप, कम्युनिकेशन कैसा है बंदे का, हार्ड वर्किंग कैसा है, क्यूरियोसिटी कैसी है, क्विक लर्नर कितना है कितना नहीं है ना। कहीं से नए स्पेस में छोड़ दिया तो नए स्पेस में तैर के निकल जाएगा। ये सब चीजें जब 6 महीने हम ट्रेन करते हैं लोगों को तो हमको समझ में भी आ जाती है, हमको पता होता है कि बंदा, ये बंदा में भाई बढ़िया पोटेंशियल है, बेट ऑन इट। तो भाई बट ये तो बायस भी हो जाएगा ना सागर, कि बेस्ट कैंडिडेट्स तो हमेशा प्राइवेट होने जाएंगे. नहीं 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 नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं जस्ट किडिंग. होता। नहीं नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली ये बिल्कुल बायस बिल्कुल होता है, रख सकते हैं, पर कभी हम हमेशा अपने टॉप सारी लिस्ट देते हैं सारे रिक्रूटर्स को, 3-6 महीना Okay. मारते हैं लोगों के लिए, अपने हमारी प्लेसमेंट So टीम। first preference is that you give them and expose them to the world, like outside करेक्ट world. करेक्ट, और उसके बाद भी हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप के बाद भी यू कैन गो आउटसाइड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। Hmm. अगर जो हमारे पास आया है तो भी इंटर्नशिप पे आएगा, इंटर्नशिप पे आके फिर जाएगा, तो यू कैन गो आउटसाइड, दे इट्स अप टू द कैंडिडेट्स, अप टू कंपनीज आल्सो, नथिंग Got it. बाउंडेशन, नो बाउंडेशन, बट वंस दे गेट फुल टाइम देन देयर इज अ Contract and stuff. Got it. यार so हमने पूरा बात किया कि यार okay how the course looks like and generally what are the real expectations of getting into tech, having that journey and securing a job or whatever. अब लेट्स से कोई आपको सुन रहा है जो कि थर्ड फोर्थ ईयर में है, मे बी टेक में है या नॉन टेक में है, एंड समवॉट इंटरेस्टेड है टेक में आने में, फ्रंट एंड सीखने में, ये वो, आपकी ऑनेस्ट एडवाइस क्या होगी? लेट्स फॉरगेट अबाउट कि प्राइमेथॉन एग्जिस्ट करता है, राइट? मतलब आपकी देयर आर सो मेनी बूट कैंप्स, बट आई आल्सो फील कि इफ यू आर really curious, there is like lot of educational content out there for free to consume and to grow, you know. मतलब this statement may sound counter uh, productive for but honestly, because मतलब there is like India is a massive country, right? There's so many people who want to learn. हर कोई तो नहीं शायद आ पाएगा ना यहाँ पे for so many reasons. So what do you think, like in your honest sense, what do you think यार, एक बंदा जो बैठा हुआ है थर्ड फोर्थ ईयर में, let's say एक 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 पर्सन, let's talk about my town in मुजफ्फरनगर, it's a small town, right? वहां पे बैठा हुआ है और फिगर आउट कर रहा है कि यार मेरे को टेक में कुछ करना है, बट मेरे को तो साला समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, बिकॉज कोई बोलता है फ्रंट एंड पढ़ लो, कोई बोलता है बैक एंड पढ़ लो, कॉलेज
वाले बोलते हैं डीएसए करके मार्क्स लेके आओ, बट मैं कैसे वो इंडस्ट्री में पैर जमाऊं टाइप्स वाली बात की, मैं स्टार्ट कैसे करूं? हमारी इंडस्ट्री में स्किल सेट कुछ भी हो, लेकिन फंडामेंटली है कोडिंग स्किल सेट। तो आपको कोडिंग करना है ना, एक लैंग्वेज उठाओ कोई सी भी, भले जावा स्क्रिप्ट उठाओ, बहुत पॉपुलर है आजकल, पाइथन उठाओ, जावा उठाओ, कोडिंग करना स्टार्ट करो। उस कोडिंग में आपको 34th ईयर में हो, यू शुड बी सॉल्विंग सिग्निफिकेंट, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, लीड कोड टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स, यू शुड कीप अ टारगेट कि यार आप हर दिन एटलीस्ट एक कोडिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो वन building a coding skill set. One thing is building a industry ready स्किल सेट, विच कुड बी कि बैकएंड डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस स्पेसिफिक चीजें हो गई। तो उनमें आप अपना कुछ तो अगर सेल्फ लर्निंग कर रहे हो तो यू कैन लर्न फ्रॉम मेनी सोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। यू जस्ट नीड अ डिसिप्लिन, है ना, आपको हर दिन करना पड़ेगा। वाइल समझ में नहीं आ रहा तो भी फाइट मारनी पड़ेगी, खुद से फाइट मारनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा। तो ये सीखो खुद से, ये सीख लिया उसके बाद देन यू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स या तो इंटर्नशिप कर लो, इज ऑलवेज प्रेफर्ड। अगर एंड मोर देन वन इंटर्नशिप इज ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि 2-3 कंपनी का आइडिया लग जाता है आपको, अलग अलग टाइप के काम का आइडिया लग जाता है आपको, एंड यू गेट अबाउट देन बेसिक प्रोफेशनल मैच्योरिटी के अच्छा कैसे काम होता है इन अ वे बिफोर यू एक्चुअली नीड टू गेट अ जॉब। So that is, so you can do internships, as many internships as possible, जितनी कर सकते हो करो। Do not worry about free or paid or whatever stipend in the early internship time। It's depends on company to company। Then अगर ये सब भी नहीं हो पाता तो खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। There are many projects which you can pick up from Figma से उठा सकते हो, खुद से बना सकते हो। There are many examples। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी सी स्किल सेट बेटर हो। एंड वंस दीज थिंग्स आर हाईलाइटेड ऑन योर प्रोफाइल, योर रेज्यूमे स्टैंड्स आउट कि इस बंदे करेक्ट। को वो आता है जो मुझे चाहिए। तो मैं वैसे ही देखता हूँ जब हायरिंग कर रहा होता है ना, तो वैसे ही देखता हूँ कि इस बंदे को तो वो आता है जो मुझे चाहिए। करेक्ट। अगर कोई बंदा सिस्टम डिजाइन कर ले, अच्छा कोई बंदा सिस्टम डिजाइन कर ले, है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन सोच ले, है ना, खुद से गूगल आउट करके फिगर आउट करना जानता हो, उसको हायर कर ही लोगे। तो Absolutely. This is a wonderful playbook for anyone who wants to start or who is already struggling or on the path. Yeah, I also strongly feel, and this I keep on telling to a lot of friends with other लोग, but mostly juniors and people who kindly come or to seek some advice, especially in tech, right? Yeah, tech is a space which is constantly evolving, right? मतलब you'll see कि यार आज ब्लॉकचेन आ गया, ब्लॉकचेन ने ये पार्ट, आज एआई आ गया, एआई ने तो जॉब्स ले ली, एंड सो थिंग्स। एंड इवन इन पर्टिकुलर टेक, मतलब फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में हम रिएक्ट सीखते हैं, लाइक 5 साल पहले रिएक्ट के जो लाइब्रेरीज थे और जो एप्लीकेशन एक्सपीरियंस था वर्सेस जो अब है, community support and application development experience, libraries coming in, has like crazily scaled, right? So there is a constant need of, I would say unlearning and learning, right? मतलब कि यार जो चीजें गलत हैं उनको छोड़ो क्योंकि ये शायद आउटडेट हो गई, you can't do it same way, and learn the new stuff, right? Because that is the need of the hour, because 6 महीने बाद, 1 साल बाद, people will not even use that technology जिसके तुम ज्ञानी बाबा हो types, and the world will shift entirely, right? This creates a lot of panic also sometimes, if you think it from that lens. You are constantly, you are worried, but I feel the way to avoid is that you become so good in figuring out things, right? मतलब for example कॉलेज में हम सब प्रोजेक्ट्स करते थे और इतना सब कुछ होता था, तो I used to rely heavily on Google, because the only thing or skill which at that point of time, I don't know, I heard from some senior or was really focusing personally, was कि यार अगर तुम गूगल से फिगर आउट करना सीख गए ना, इट्स रियली अ स्किल, बिकॉज बहुत लोग नहीं करना जानते उसको। बट टू इवन एक्सटेंड इट फर्दर, आई थिंक टेक एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना है। 6 महीने पहले के स्किल सेट पे अब रिलाई नहीं कर सकते, एंड ऑनेस्टली द कर्व इज स्टीपेस्ट इन टेक कंपेयर टू लेट्स से एनी अदर डोमेन, नॉट undermining the efforts in any other domain, but just that it's too technical here, right? And I would say the world is exploding in tech. So what would be your advice to, let's say, who is currently in the tech space? यार करेंट इन टेक स्पेस में मैं मेरी कंपनी के लिए मंत्रा फॉलो करता हूँ, और हर किसी को जो भी मिलता है शॉर्टलिस्ट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, किसी को भी बोलता हूँ भाई हर दिन सीख, हर दिन तू 30 मिनट निकाल, खुद की लर्निंग पे डाल, चाहे कितना बिजी हो। अगर ऑफिस शुरू हो जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं टेक में, मैंने हमेशा देखा है कि लोग कंप्लेंट यही करते हैं कि यार हमारी लर्निंग नहीं होती। तो मैंने यही मंत्र रखा है कि भाई तुम्हारी लर्निंग ऑफिस का काम शुरू होने के बाद नहीं होती, नहीं हो सकती, उससे पहले आधा घंटा निकाल, है ना। लेकिन
लर्न एवरी सिंगल डे, लर्न। सो दो टाइप की लर्निंग होती है, ऑन द जॉब लर्निंग, ऑफ द जॉब लर्निंग। सो लोगों के माइंडसेट में सिर्फ ऑन द जॉब लर्निंग को लर्निंग बोलते हैं कि यार इस कंपनी में लर्निंग नहीं होती। भाई वो लर्निंग सिर्फ लर्निंग नहीं है ना, वो तो एक काम है, उसके लिए यू गेट पेड इफेक्टिवली, बट करेक्ट। learning is also outside where you are polishing your skill set, developing your skill set, upskilling yourself, and एक बार वो जो आधा आधा घंटा आपने डेली पुट इन किया है या कभी वीकेंड्स पे, अर्ली करियर में तो आपको फाइटर मोड में काम करना होता है ना, सिंपली पुट आपको अपने आप को बनाना होता है। तो मैंने देखा है जीरो से लोगों को भी हीरो बनते हुए इन 3 to 5 years की जर्नी, बाय जस्ट डूइंग दीज थिंग्स, कि भाई हर दिन में जहाँ नया टॉपिक मिल गया मैं सीख रहा हूँ, फिर उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि भाई चीज मेरे को मतलब नहीं है उस चीज से। तो टेक में यही है यार, जो भी नई बजवर्ड चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, खुद की डोमेन में आप फ्रंट एंड में काम करते हो, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, बैक एंड में देयर आर मेनी एंड लेयर्स एंड levels of depth. You should just try to drill into each level of depth. So step by step आपको continuous skill set में डालना चाहिए। And also once you are ready, once you are theoretically ready and have some basic practical knowledge also, you will get those opportunities in your own organization also, otherwise you will get it down. But you should have that skill set beyond, so on beyond on the job learning primarily. लाइक मैं एग्जांपल डिजाइनिंग योर वर्क स्पेस की एग्जाम्पल लर्निंग हो रही है। हम एग्जाम्पल देता हूँ एक चीज की यार, लोग जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फाइनल राउंड लेता हूँ, 4 साल 5 साल हो गया, लेकिन लोग सिंस वो ये अगेन लोग ऑन द जॉब लर्निंग को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये लर्निंग नहीं हो रही जी, मेरी कोई कंपनी में कोई बदलनी है बिकॉज लर्निंग नहीं हो रही। ये तो सबसे बेकार आंसर होता है। बट मुझे लगता है यार, मतलब इट्स ऑल्सो अ कांस्टेंट सेल्फ ड्राइव थिंग ना, कि यार खुद भी आपके अंदर कितना चूल्हे बोल सकते हो टू से कि यार आई वांट टू ट्राई आउट एंड फिगर आउट। वो तो नहीं, नॉट एवरीवन विल हैव दैट। नहीं है तो नहीं है, सी वो बंदे में नहीं है तो आपको क्या करने का है? आप यू कैन नॉट चेंज ए पर्सन फंडामेंटली, वही। he or she doesn't want to change, right? You cannot help, बट you cannot motivate, you cannot inspire, you cannot do anything। मतलब अगर उसके पास में विल ही नहीं है वो चीज करने की, एक्सेप्ट करने की, तो नहीं कर सकते आप। एंड द डाउन साइड ऑफ इट इज कि यार थोड़े टाइम बाद तुम्हारी ग्रोथ ही स्टैग्नेंट हो जाएगी, बिकॉज तुम नई चीजें ना तो हैंडल कर पाओगे ना करना चाहोगे, बिकॉज ओवर टाइम यू बिकम फिक्सेटेड ना, कि जितना आता है उसी में सॉल्व करेंगे, कुछ नए चैलेंज है उसको छोड़ते हैं। मैं अपनी कंपनी में काफी कोशिश करता हूँ यार कि मैं रैंडम लोगों को रैंडम चीजें थ्रो करूँ, जब जहाँ मुझे करेक्ट। मौका मिलता है ना, मैं डराने वाली चीजें भेजता हूँ कि भाई चलिए करके लेके आ मेरे को, कि मुझे पता है इससे नहीं होगा, लेकिन अगर करके लेके आ गया तो बंदा है। करेक्ट। वहाँ आइडेंटिफाई हो जाता है वो तुरंत। नहीं नहीं यार, ये बिल्कुल फेयर है। आई मीन टू मुझे तो ये भी लगता है कि जनरली वो वाली आदत होती है पहले कोचिंग के टाइम से, ट्यूशन के टाइम से, नोट्स बनाते रहो, करते रहो, लिखते रहो। बट आई फील द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज जस्ट बाय डूइंग। मतलब तुम्हें लग रहा है आज कुछ एक्साइटिंग है कहीं पे, जस्ट बिल्ड अ साइड प्रोजेक्ट ना, जस्ट बिल्ड लाइक स्पेंड 1 वीक, हाफ एन आवर ईच डे एंड बिल्ड शिप समथिंग आउट ऑफ इट। बनेगा नहीं बनेगा, बट 5 चीजें पता चल जाएंगी एंड यू विल बी मोर knowledgeable at the end of the day. So which is constantly needed. And now coming to one of the topics which I've been constantly discussing in last 5 of my episodes, right? Which is talking about AI and its impact, right? I genuinely feel there is a need to talk about it because the world is changing super super fast, and in no matter of time, probably in a year or so, in 2 years, शायद हम बैठ के वापस पॉडकास्ट पे डीपर एलएलएम डिस्कशन कर रहे हो कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, हम तो ये बना रहे हैं। आई डोंट नो। Next will be that one. Correct, right? So that can be a reality. But given you are so much into the tech space, right? Or आप not only training side, you are also consuming tech ना, आप इतने सारे clients के साथ काम कर रहे हो, you are building apps inside India, outside India. Generally, what is your view and what is your view in AI shaping this tech space, and how is it right now? Where AI, AI's impact in the different parts of technology and non-technical things also, like biomedical. There's a big topic to discuss, but I think what I'd like to focus on here right now is कोडिंग में भी बहुत सारे मैकेनिकल वर्क होते हैं, कुछ Correct. थिंकिंग सोल्यूशनिंग वाले टाइप के वर्क या कुछ नए टाइप की चीजें, बाकी बहुत सारी चीजें मैकेनिकल होती है कि भाई यार इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक्सेट्रा। ऑल दोस मैकेनिकल वर्क कैन बी ऑटोमेटेड विद द एआई। चैट जीपीटी का यूज करो आप अगर, तो इट कैन गिव यू लॉट मनी the full code to write your basic mechanical stuff any day, and आप उसको ट्रेन भी कर सकते हो थोड़ा सा।
कस्टमाइज भी कर सकते हो, ट्रेंड भी कर सकते हो। बेसिकली पहले जो हमारे हम जब कॉलेज में थे और हमारे टाइम पे जो गूगल वाला स्किल सेट था कि गूगल करना अच्छे से आना चाहिए, तो आज फॉर एवरी इंजीनियर द स्किल सेट इज एआई अच्छे से यूज करना आना चाहिए, राइट? यूज करना आना चाहिए। ठीक है भाई, मत बनाओ, तुमको नहीं कोड इंजीनियरिंग करनी है, मत करो तुम, नहीं लेकिन करना है एलएलएम इंजीनियरिंग। हाँ हाँ, तुम अच्छे से, बस अच्छे से यूज करना जानते हो कि हाउ डू आई मेक चैट जीपीटी और बार्ड राइट माय कोड फॉर दिस पर्टिकुलर यूज केस, फॉर, करेक्ट। क्योंकि ये इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप अपने स्किल सेट को अभी से उस पे ऑन रखोगे तो दीज इंजन्स, दीज एलएलएम्स आर इम्प्रूविंग एंड ऑलरेडी अभी इनकी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, पाइथन में काफी अच्छी एक्यूरेसी है इफ यू लुक एट इट। तो दीज कैन, अच्छा गूगल करके क्या होता था, गूगल करके क्या होता था, गूगल करके हमारी वो काम जो 5 घंटे का है हम 1 घंटे में कर पाते थे, यही था गूगल का, करेक्ट। है ना? स्पीड करने, स्पीड हमको इफिशिएंसी दी गूगल ने, या अटक जाते थे तो एक्सपर्टीज मिल जाता था। है ना? दिस इज व्हाट एआई विल गिव यू ऑल्सो। ये उससे भी 10x मोर स्पीड देगा आपको। शायद आपका एक दिन का काम आप 1 घंटे में कर पा रहे हो, इंजीनियर्स रहेंगे, जॉब्स रहेंगी, लेकिन इफिशिएंट हो जाएंगी। करेक्ट। नहीं यार, एब्सोल्युटली एग्री। एंड मैं तो इस चीज का फर्म बिलीवर ही हूँ कि विद टाइम यू शुड बिकम एफिशिएंट इन लाइफ, एवरीवन शुड, एंड एआई इज जस्ट एन एनेबलर, राइट? कि एंड यू शुड बी लाइक अवेयर सेइंग, स्पेशली बीइंग एन इंजीनियर, कि यार ये काम तो मेरा एआई से हो ही सकता है, तो मैं वो टाइम कहीं और थिंकिंग में लगाऊंगा, सोल्यूशनिंग में लगाऊंगा, बेटर चीजें करने में लगाऊंगा वर्सेस डेली ग्रंट स्टफ। So that is absolutely true. Yeah, I think the last topic for our today's discussion, and something which is really close to my heart also, because this is something which we are doing at Air Black, right? Where we are saying that we are, enabling more people, right, by giving them education through our outcome-led courses, right, and especially focused on women right now. I see, like within my career, let's say the last 7-8 years in tech, and 2-3 years prior to that in college, there is a lesser participation of women in tech, right? And there is a very clear reason to that, because there is a very low participation of women in the country's workforce, anyways, right? So, of course, ये आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लोगे तो द the रेशियो ratio is bad. The ratio is really वेरी bad. बैड, वेरी For many, बैड। it disappoints. But I mean, overall, the participation in tech is also really less, right? So, and you might find here, I remember these MNCs, etc., do a special campaign or Yeah, do these programs, right, for women, and the whole objective for them is to get like more women get opportunities, participate in the tech ecosystem, and so on, right? Is there something in particular which you follow to ensure that you are also contributing in getting more women in the tech ecosystem? यार अगेन अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने प्राइमेथॉन में सारा इकोसिस्टम ही इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग के अराउंड बनाया हुआ है, जो भी कर रहे हैं हम लोग, राइट? प्राइमेथॉन एकेडमी, प्राइमेथॉन सर्विसेज में तो अभी सच कुछ अलग से डिवीजन नहीं है, ऑल्दो वी ऑलवेज encourage and prefer women in any role, but वो उसके अलग रीजन है कि बहुत क्यों नहीं हो पाता है और वॉल्यूम ही क्यों कम है कॉलेजेस में, कम, Correct. वो अलग रीजन है। बट मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में अभी मैं दिस 2024 मार्च और अप्रैल आई एम स्टार्टिंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आई एम स्टार्टिंग विद माय विलेज इन एमपी, एंड वहां से मैं स्टार्ट करूंगा एक छोटा सा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर Oh, which nice. which will just focus with girls in the village primarily, क्योंकि मैंने देखा है कि वहां पे Very nice. होता है कि यार लोग ना बाहर भेजते नहीं है, हाँ, सोशल कल्चर वहाँ का ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है कि बाहर नहीं भेजती है बहुत ओपनली, कुछ लोग भेजते हैं लेकिन अगेन द रेशियो इज वेरी स्क्यूड। सो माय गोल इज कि विद दैट I'll be educating these girls of my village in computer with different skill sets, again I'll be focusing on skill sets, and देखते हैं कि वो लोग आगे जाके करियर में क्या बना पाते हैं, मतलब they can build a career, मतलब स्टार्ट करेंगे बेसिक स्किल सेट लाइक ऑपरेटिंग कंप्यूटर, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब तो ठीक है, बियॉन्ड उसके आगे धीरे धीरे कोडिंग भी इनेबल करेंगे, एंड
कहीं जॉब में आगे लग जाए। क्योंकि मेरा मेरा एक मेरा अगेन बिलीफ है कि यार अगर वो मैं उनको बस उतना डायरेक्शन दे पाया कि आप भले 10th 11th क्लास में हो, 9th 10th क्लास में हो, स्टार्ट कोडिंग, स्टार्ट डेवलपिंग, बिल्डिंग एप्स, building or utilizing this AI spaces and AI apps and build on top of these, वो अपने आप में न्यू इंजीनियरिंग होने वाली है। सो विच विल क्रिएट मेनी मोर जॉब्स। तो आई थिंक इस साल स्टार्ट करेंगे सेंटर के साथ में 10 to 15 कंप्यूटर सीट्स वाले सेंटर से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर वो बहुत अच्छा जाएगा तो आई एम श्योर पैमाथॉन इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड गुड स्पेस। सारा जो सारा CSR होगा वो उस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में करके आई स्केल दैट थिंग बेसिकली। सो अगेन कंप्यूटर एजुकेशन को जॉब से लेके बीच में बिटवीन एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट को लेके फिर वहाँ पे स्कूल लेवल पे बात करिए कंप्यूटर एजुकेशन की, 0 से लेके N तक हमें पूरा पाइपलाइन बिल्ड करनी है, सॉर्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। वेरी नाइस यार दिस, ये तो मुझे लगता है काफी सही है। एंड द गुड पार्ट हियर इज यू आर एक्चुअली touching the root cause of getting more women in tech or in the workforce, which is कि works in the workforce because उनको कॉलेज या लेट्स से उनके लोकल टाउन के बाहर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन कल्चरल रीजंस और फैमिली रीजंस एंड व्हाटएवर। एंड ये बिकॉज एक हाइपर लोकल सॉल्यूशन होगा तो डेफिनेटली you will enable more people anyways, right? And you will हाँ, enable और more women. मतलब और प्रैक्टिकल चीजों में बात करेंगे हम उनके साथ में कि और हाउ कैन दे बी इन बिजनेस और दे कैन डांस इफ दे कैन नॉट गेट इनटू जॉब। मतलब वो कैसे अपॉर्चुनिटी बनानी है वो विल फिगर आउट ऑन द जॉब ओनली, बट विल स्टार्ट विद बेसिक एजुकेशन कंप्यूटर्स। Very nice, sir. This is so nice to hear, and I like. I mean, this episode is really really interesting in the sense that the Primathon aspect in the entire premise, right, is so much focused on impact, and which is something which I also like to really really associate with in any kind of work which I do. कि यार ये कितना useful है, कितना value create करने वाला है, चाहे वो 2 लोगों के लिए हो, 5 लोगों के लिए हो। So it's great to see that synergy here. And I wish you all the luck for all the great endeavors you are pursuing. All the very best. And thank you again for being on the show and sharing valuable insights with us and the audience. Thank you. Thank you so much, man, and thank you so much for giving me this opportunity to speak here. So always pleasure talking to you again. See you. Oh, nice. Very nice. Thank you. All right, thank you so much.